Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello, viewers. Welcome once again to my channel. My name is Mohammed Atiq Anwar, and you're watching my channel, Mohammed Atiq Anwar, and Education for All. So, a quick plea before we start to please like, share, and subscribe to the channel and to watch fully. Okay, welcome to this PowerPoint presentation, which is in the Recipe of the Day series. So it's been requested by a number of close friends. They wanted it, uh, the recipes in a written form so that they can follow it step by step. So I have prepared these PowerPoint presentations, most of which are copied and pasted from the BBC website. So it's a very simple vegetable pasta bake recipe. It's the 50th one I'm doing. So I've done this on many occasions in the practical videos as well. So if you want to see those recipes, please do go to the cooking made simple section of the playlist. नाजरीन खुश आमदीद एक बार फिर खुश आमदीद मेरा चैनल मोहम्मद अतीक अनवर एंड एजुकेशन फॉर ऑल ये है जी एक बार फिर रेसिपी ऑफ द डे और ये है नंबर 50 बहुत बहुत ही आसान वेजिटेबल पास्ता बेक रेसिपी है ये मैंने प्रैक्टिकल तरीके में भी काफ़ी तैयार की है बर मेहरबानी प्लेलिस्ट पे जाएं तो वहाँ कुकिंग मेड सिंपल में ये आपको दिखाई जाएगी ओके जी लेट्स गो टू द इंग्रेडिएंट्स नाज़रीन ये चीज़ें आपको ज़रूरत होंगी Okay, so we will read a red pepper and a yellow pepper. We are going to remove the seeds and cut those into small pieces. नाजरीन हमें शिमला मिर्च इस्तेमाल करेंगे चाहे वो रेड हो येलो हो ग्रीन हो जो भी आप चाहते हैं और उसे बीज निकालेंगे और छोटे पीसों में काटेंगे We will need one aubergine which is going to be finely chopped एक अदद बैंगन जो हम छोटे पीसेस में करेंगे एक अदद किया तोरी जो छोटे पीसों में करेंगे We will need a courgette which we will cut finely one red onion which is going to be sliced एक छोटा सुर्ख प्याज जो हम स्लाइस करेंगे 3 tablespoons of olive oil 3 अदद tablespoon जैतून का तेल 150 grams of cherry tomatoes we're going to half 150 ग्राम चेरी टमाटोज ये छोटे टमाटोज होते हैं नाजरीन जो हम आधा करेंगे or 400 grams of tin chopped tomatoes so that comes to 550 if you don't have tin tomatoes then 550 of tomatoes we should do it नाजरीन ये 400 ग्राम tin टमाटो का लिखा हुआ है अगर आपके पास चेरी टमाटोज नहीं है तो 550 ग्राम टमाटोज कर लें 2 garlic cloves दो अदद लहसुन के टुकड़े 3 tablespoons of chopped basil. Basil ये एक herb होती है नाजरीन इसके 3 चम्मच पहले तो चॉप करेंगे तो फिर 3 tablespoons 30 grams of pasta whichever one you have for example rigatoni or pen नाजरीन 300 ग्राम पास्ता ज़रूरत है चाहे वो यहाँ लिखा हुआ rigatoni या pen ये पास्ता की किस्म है 150 grams of mozzarella. If it's solid, then we need to chop it. 150 ग्राम mozzarella नाजरीन अगर वो solid है तो उसे हम chop करेंगे काटेंगे छोटे छोटे pieces 2 tablespoons of pesto which is a sauce for those that use it. I think it is actually really nice. We buy it from the supermarket. It I think ingredients are things like basil and pine and lots of different things in it. नाज़रीन ये एक सॉस यहाँ मिलती है उसे प्रेस्टो कहा जाता है पेस्टो कहा जाता है इसमें बाजल और
नट्स की किस्में होती हैं, अगर नहीं है तो कोई भी सॉस आप इस्तेमाल कर सकते हैं. 2 to 3 tablespoons of parmesan grated, or a vegetarian hard cheese alternative. 2 या 3 चम्मच बारीक पामेजान चीज़ हमें ज़रूरत होगी नाजरीन, या सब्ज़ी की जो आपके पास है. एंड फाइनली salt and freshly ground pepper, और आखिर में नमक और काला मिर्च हस्बे ज़ायक़ा. Okay, let's show you the method. अब हम तरीका दिखाएंगे. So it's a very simple dish, as I say. So first of all, we need to preheat the oven to 170 to 190 degrees Celsius, and if we have a gas or a fan cooker, then that is gas mark 5. Sorry, fan वाला जो है वो 170 से 190 तक. Okay, viewers, if your cooker is a fan one, electric one, it's 170 to 190 degrees Celsius, and if it's gas, it's mark 5. Put the peppers, aubergine, courgette, and onion into a roasting tin or deep baking dish, and coat it in oil. Season with salt and pepper and cook for 45 minutes, turning twice until the vegetables are tender and golden brown. नाजरीन, हम जो सब्ज़ी काटी है यानी शिमला मिर्च, बैंगन, किया तोरी और प्याज, ये रोस्टिंग टिन में हमने डालना है या बेकिंग डिश में, और इस पर हम तेल छांटेंगे ताकि तमाम सब्ज़ी पर तेल हो. उसे सीज़न करेंगे हस्बे ज़ायक़ा नमक और काली मिर्च, और इसे हम रोस्ट करेंगे जी 45 मिनट पर तक. Okay, we're going to cook it for 45 minutes, और पलटेंगे और एक दो दफ़ा, या जब तक सब्जियां जो हैं वो नरम हों और भूरे रंग की हों. Okay, add the cherry tomatoes, chopped tomatoes, garlic and basil, and cook for 10 to 15 minutes. Okay, अब आपने cherry tomatoes, tin वाले tomatoes, लहसुन और basil डालना है, जो सब्जी में जो तैयार की गई थी, और 10 से 15 मिनट्स के लिए और कुक करना है. ओके, ये हो गया जी सब्ज़ी और tomatoes. Meanwhile, cook the pasta in a boiling salted water according to the pack instructions. Add 4 to 5 tablespoons of the pasta water to the vegetables to loosen the tomato sauce. Okay जी, हमने पास्ता कुक करना है पानी में, और उसमें नमक डालना है. तो जैसे इंस्ट्रक्शंस है, मेरे ख्याल में 8 या 10 मिनट में हो जाएगा. तो इस पानी से 4 से लेकर 6 टेबल स्पून हम डालेंगे जो वेजिटेबल्स हमने तैयार किए हैं. याद रखना उसमें वो पेस्टो सॉस डाला था, तो उसे हमने नरम करना है. ओके जी, that's it. So that's the pasta boiled. Drain the pasta and stir in to the roasted vegetables. Stir through the mozzarella and pesto. Top with parmesan and return to the oven for another 10 minutes until the cheese is melted. Okay, so I think इस स्टेज मैंने गलती की थी, इस स्टेज पे पेस्टो डालना है. ओके, सबसे पहले पानी निकालना है पास्ता से, और ये जी हम वेजिटेबल में डालेंगे, तो फिर इसके साथ मोज़रेला और पेस्टो डालेंगे और खूब हिलाएंगे, और साथ ही हम पामेजान मिक्स करेंगे. तो फिर वापस ओवन में रखेंगे और हम 10 मिनट्स के लिए कुक करेंगे. इतने टाइम में चीज़ को पिघलना चाहिए और आपकी रेसिपी तैयार हो जाएगी.
Okay, that is the method. I have prepared the Urdu for this, so we'll show you that very quickly. I'm not going to read it because it's going to take too long. नाजरीन ये है जी उर्दू मेथड तो मैंने ये स्लाइड्स पहले तो आखिर में दिखाता था मगर लोगों ने मशवरा किया कि मेथड के साथ ही हो तो ये है जी उर्दू आप लोग अपने टाइम में से पढ़ें अगर मैंने पढ़ा तो 10 मिनट्स और हो जाएंगे ऑलरेडी हम 10 मिनट्स पे हैं तो इसका फ़ोटो देखते हैं लेट्स शो यू हाउ इट शुड लुक there we go it really is a nice simple recipe so what you see there is tomatoes in their glory. Okay, and all the vegetables, whether it's aubergine, courgette, etc. नाजरीन ये देखो जी ये सब्ज़ी कितनी प्यारी लग रही हैं और आपकी मर्ज़ी है अगर आप और सब्ज़ी डालना चाहते हैं और खासकर जैतून if you want to put olives in it that's another thing but the vegetables of your choice really so in this recipe it was courgettes uh, Oh, what else was I've forgotten now? Courgettes, aubergines. Okay, and a few other things. Okay, hopefully yours will turn out as good as that. I don't see why not because it really is a simple recipe. नाज़रीन ये बहुत बहुत आसान रेसिपी उम्मीद है आप ट्राई करेंगे और आपकी भी ऐसी होगी ये it's a really tasty recipe. Please do try. Okay, that is it. It just remains for me to say thank you, thank you, thank you. Thank you for watching. I ask you to please like, share, and subscribe to the channel. Tell all your friends about the channel. नाजरीन बहुत बहुत शुक्रिया बराए मेहरबानी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा तमाम दोस्तों को चैनल के बारे में बताएं अपना ख्याल रखना दूसरों का ख्याल रखना दुआओं में याद रखना अल्लाह हाफिज़